Ram Ram, Sitaram, very good morning everybody. Whoever watching in the morning this video, have a fabulous day, and whoever watching during the day also you have awesome day. जो कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है सुबह को और ड्यूरिंग द डे को, आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए, उसी के साथ मैं ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं हाफ वीडियो मेरा घर का ब्लॉगिंग में बताऊंगी एंड हाफ वीडियो वी विल गो समवेयर. Isn't it so exciting? Always, I'm always actually to show you around the New Zealand and beautiful places. So today I'm going to share home blogging, and at same time I'm going to share I'm gonna tell you wherever we going. तो मैं वो जगह आपको वहाँ पर बताऊंगी. बहुत ही अच्छी जगह है, another beautiful place, and can't wait to share that place. तो आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कौन सी जगह अच्छी लगी आपको, एंड क्या आप न्यूजीलैंड में देखना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत क्लू आएगा. सो इट गोना बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू लीव अ कमेंट विच प्लेसेस यू लाइक एंड व्हाट एल्स यू वुड लाइक टू see around the Auckland at the moment, in around the Auckland, then I will tell you around the New Zealand. So yeah, today is a Saturday, so last few days it's been raining because it's a winter, so luckily it's not too windy, only rainy, so it's good. So today is a sunny day. तो आज धूप निकली है बहुत ही अच्छी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत गार्डनिंग कर लूँ आज, क्योंकि लास्ट फ्यू डेज से तो बहुत ही रेन चल रही थी, तो मैंने सोचा कि अब तो कुछ नहीं होगा, बाहर निकल नहीं सकती, चारों तरफ रेन एंड वाटर होता है, तो थोड़ा बहुत हार्ड होता है गार्डनिंग करने के लिए. सो टुडे इट्स सनी, सो आई थॉट आई एम बेटर डू सम गार्डनिंग एंड स्पेंड टाइम विथ प्रिया. विंटर है बट अभी भी थोड़े बहुत तो अच्छा लगता है सुबह सुबह देखने को, It really feel good early morning. Beautiful red chili that what I'm gonna do, I'm gonna dry underneath of sun, so and then it lasts a few months as a sun dry chili, because I use quite a bit dry chili in my cooking, and anyway it's a season is finished now, so what I done, I cut all branches and 2 chilies is still there, so once it's a season come चिल्ली विल ग्रो ऑटोमेटिकली. तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, तो ये चिल्ली की अब सीज़न तो फिनिश हो गई, तो मेरे पास स्टिल ये चिल्ली है, तो मैं उसको धूप में सुखा लूँगी. तो मैं अपने कुकिंग में सुखाई हुई जो रेड चिल्ली होती है, ड्राई रेड चिल्ली, मैं बहुत ही यूज़ करती हूँ, तो मुझे लेनी नहीं पड़ेगी, बहुत सारी है. तो आज सन भी है तो मैं उसको अच्छी तरीके से सुखा लूँगी. तो गार्डनिंग करने का मज़ा ही कुछ और है, पीसफुल फीलिंग होता है. तो आई रियली इंजॉय गार्डनिंग, आइदर फ्लावर गार्डन और वेजिटेबल गार्डन. एट द मोमेंट वी डोंट हैव मच vegetable left, anyway 1 or 2 beans plant have a few beans in there, but now in the winter I use frozen one. तो मैं क्या करती हूँ, सीज़न में जो कुछ भी होता है एक्स्ट्रा, मैं उसको फ्रीज कर देती हूँ. करेले, बीन्स, एनीथिंग any vegetable from the garden, I freeze them and then I use in a winter.
तो वो सारे जो समर में मैंने फ्रीज किए थे वो अब मैं विंटर में यूज़ करूँगी. सो इट्स way better than buying from the frozen one, because वो थोड़ी बहुत डिफ्रोज हो जाती है. ये तो फ्रेश होती है, तो विद इन 6 मंथ में वो यूज़ हो जाए तो उसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है. So I just finished gardening and now I'm going to make a lunch for me and Lakhu, and today I'm going to make a poha. तो gardening अब हो गया, तो अब मैं लंच बनाऊंगी. लक्ष्मण अब बस आने ही वाले हैं काम पर से, तो मैं फटाफट लंच बनाऊंगी. Poha is so easy and it's very light for lunch too. तो ये बहुत ही आसान है रेसिपी, जल्दी से हो जाती है एंड लाइट भी होती है खाने में, लंच करने में. तो पोहा की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, potato pie and poha recipe. If you can search in my channel. So yummy. The recipe is for like if you want a 1 pot meal, it's a perfect. Kids love it because it's good potato and so as all vegetables and everything. So at the moment I'm making only poha. तो अभी तो मैं पोहा कर रही हूँ, बट उसमें चैनल में जो रेसिपी है वो आप डिनर में यूज़ कर सकते हैं. तो वो 1 pot मील हो जाएगी, अच्छी वाली. तो उसमें वेजिटेबल है, पोटैटो है, चीज़ है, तो किड्स को अच्छी लगती है. तो वो मैंने अपनी तरीके से क्रिएट की है रेसिपी. So if you like to watch or make that dish, just go in my channel and have a look. Potato pie in poha recipe. तो अभी पोहा तो मैं और लक्ष्मण के लिए हम दोनों के लिए बना रही हूँ. एंड प्रिया wants to eat पराठा, मिक्स वेजिटेबल पराठा, उसको खाना है. So I'm making a paratha for her also. Mixed vegetable paratha recipe is in my channel too. So it's got a chili, red chili, curry leaf, curry पत्ता, प्याज है, पोटैटो है, वो सब कुछ कुक हो जाएगा. अब मैं सब स्पाइसेस डालूंगी. Now I'm going to add all dry spices like a turmeric powder and everything. And then very last I'm going to add poha. Reason to add poha very last, because poha is already half cooked, say like that, so it can stay as it is, if we add very last. So I'm gonna add a little bit lime juice, a little bit brown sugar, so it's a nice sweet and tangy flavor. So I'm gonna let it cook for a few minutes until potato is fully cooked, and then I'm going to add poha. And it looks yummy. I'm just making a tea, Indian tea, because it's a slightly cold. तो ठंड में अदरक वाली चाय हो तो बहुत ही मज़ा आ जाए लंच करने का. Okay, poha is ready, paratha ready, tea ready, and I got some sweet as well. It's called methi pak. Because it's a winter. It's made out of with fenugreek seed, and it's so healthy. Jaggery and fenugreek seeds, very healthy. So we're going to have that sweet as well. मेथी पाक हम खाने वाले हैं आज. Yeah.